Good morning, everyone. Aisha Anand, faculty at CPJ College, welcomes you all to the 7th Annual Law Festival Law Festa 2025 based on the theme Social and Welfare Law. Today, we have a judge of Moot Court event with us, who is an advocate at Delhi High Court and faculty at PW, Advocate Kifi Agrawal. Hello, ma'am. CPJ welcomes you to the event. Thank you so much. So, ma'am, today's theme is human rights today. Emerging concerns and global trends. So, ma'am, what do you think about the theme we have kept for the event? Okay. First of all, this is very important to address this question that this theme is really good because, in the modern world, people are facing so much challenges. As far as, human rights are concerned, we all know that refers to fundamental rights, right? Everyone has their dignity, respect, equality, everything, right? So this topic, this theme is, addressing major concerns. Why? Because nowadays people have environmental problems, climate change. People are facing privacy issues. Okay? As we all know, there is a landmark judgment case, Puttaswamy versus Union of India, that too says that you have a right to privacy as a fundamental right. So I think your theme is really well decided with respect to the modern world, and it definitely encourages students. It will lead to change in them. So it's really a good theme. So, ma'am, you have any tips or tricks for the participant of the event today with us? See, first of all, I would like to tell you one thing that, these events are really necessary because, these events give exposure to the students and, a book पढ़ना और एक practical experience लेना दो अलग-अलग चीज़ें हैं. जो book में मिलता है वो जो है practical में कभी नहीं मिलता है. इससे अच्छा मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि working as an advocate, on the other side working as an educator at PW, तो मुझे पता है कि एक concept को पढ़ाना और उसको apply करना तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. तो जो आपने इवेंट किया है ये बहुत अच्छा है. स्टूडेंट्स को मूड कोर्ट में बहुत मदद करेगा. प्लस एक चीज़ है, स्टूडेंट्स को मैं एक ही चीज़ कहूँगी, सी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि ना बहुत वक्त लगता है फाइल्स प्रिपेयर करने में, मेमोरियल्स प्रिपेयर करने में. तो आप निराश नहीं होइए कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट इससे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको लाइफ में ना बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये इवेंट्स जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं आपका आगे अपनी लाइफ में. तो ऑल दी बेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स. टिप्स मेरा यही है कि अपने मेमोरियल को अच्छे से बनाइए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि मेमोरियल में ना अथॉरिटी जो है वो अल्फ़ाबेटिक वाइज डलती है. तो लेट मी जज नाउ. तो आई विल गिव माई फीडबैक टू दी स्टूडेंट्स, बट ऑल दी बेस्ट टू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स. Thank you, ma'am. Thank you so much.